हे गाइस, कैसे आप लोग? स्वागत है सभी का अन अकेडमी के आज इस बजट सेशन में। एक बार जल्दी से कंफर्म कीजिए whether we are live or not and whether the audio and the video is fine or not। हाँ जी बाबू, एक बार जल्दी से ऑडियो वीडियो कंफर्म कीजिए। हाय एडू, नाम भी बच्चा ना ऐसा ऐसा मस्त रखता है कि मैं क्या बताऊं। चलिए अब देखो बाबू, अभी अभी बजट स्पीच स्टार्ट हो गया है। 2 मिनट में अखिलेश डागा सर भी ज्वाइन करेंगे और तब हम लोग साथ में आपका बजट स्पीच देखेंगे। हैविंग सेड दैट, इसके पहले मैं स्टार्ट करूं, बजट स्पीच पे आपको ले जाऊं, 2-3 बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला, ये जो बजट स्पीच अभी मैडम बता रही हैं, लेट मी टेल यू अप फ्रंट, ये आपकी मई 25, सितंबर 25 एंड जैन 26 पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो कोई भी बच्चा इस कंफ्यूजन में ना रहे कि सर जो अभी अमेंडमेंट्स होंगे, जो चेंजेस आएंगे, क्या हमारे ऑनगोइंग एग्जाम पे इंपैक्ट पड़ेगा? द आंसर इज नो। तो ये डिस्क्लेमर मैं एकदम पहले दे रहा हूं। बीइंग अ टेक्स्ट टीचर, बीइंग अ टीचर जिसका सिलेबस हर बार चेंज होता है, बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। जो भी अमेंडमेंट्स होंगे वो आपको सीए फाइनल में इंपैक्ट करेगा, क्योंकि पूरी विश्वास है मुझे कि आपका एग्जाम मई 25 या सितंबर 25 एज द केस में भी, इवन जैन 26 में इसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पहला पॉइंट। दूसरा, जो ये बजट स्पीच है, इसके 2 पार्ट होते हैं बाबू। पार्ट ए जो अभी चल रहा है, पार्ट ए में ना जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, ये आपको बस इतना बताएंगी कि जो साल गया वो कैसा है, कैसा गया, अच्छा गया, बुरा गया, क्या था, क्या चैलेंजेस थे, और जो साल आने वाला है उसमें सरकार के क्या क्या प्लान्स हैं। आगे किसमें जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना, पार्ट बी, उसमें बातें होती हैं टैक्सेशन रिफॉर्म्स की, अमेंडमेंट्स की, फाइनेंस बिल की। हाय अखिलेश सर, गुड मॉर्निंग, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हो? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। ग्रेट सर, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। आज बजट तो देखेंगे सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर मैं फटाफट से ना 1 ही मिनट लूंगा शेयर करने के लिए स्क्रीन। बिल्कुल बिल्कुल, बजट हम लोग साथ में ही देखते हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। चलिए, कई बच्चे सर ज्वाइन कर चुके हैं। स्नेहा, हर्ष, अंजलि, वंशिका, रुचिर, तेची, अनिंद्या, क्रिश। चलिए बाबू, पॉपकॉर्न पे टैक्स, बाबू पॉपकॉर्न पे टैक्स लग चुका है। पॉपकॉर्न पे टैक्स पहले ही लग चुका है, कोई नया बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, छोटे मोटे बातें, 1-2 बात मैं बता देता हूं। जैसे जो मैडम अभी बजट दे रही हैं, ये 8वां कॉन्जिक्यूटिव है, 8th। इवन मनमोहन सिंह जी एंड जो बाकी बड़े बड़े फाइनेंस मिनिस्टर जो बहुत फेमस रहे हैं, जैसे हमारे पी चिदम्बरम जी, इन लोगों ने भी 8 नहीं किया है जो मैडम कर चुकी है। सर नेट इश्यू आ रहा है क्या? वैसे मैं बच्चों बता दूं, जैसे कि जो बजट आया है ना, इसका आज शाम में हर न्यूज चैनल पे एंड हर यूट्यूबर, सो अगले 2-3 दिन इस देश में नंबर ऑफ इकोनॉमिस्ट की संख्या अचानक से 2-3 करोड़ हो जाएगी 2-3 दिन लिए, और फिर सब अपने अपने वापस आ जाएंगे। मैं पहले ही बता सकता हूं कि कौन सा न्यूज चैनल, कौन सा फाइनेंस का बंदा और कौन सा यूट्यूबर इस बजट के बारे में क्या रिएक्शन देगा। मतलब जस्ट डिपेंडिंग अपॉन जो फेवर करता है सरकार को, उसके लिए आज का बजट दुनिया का सबसे बढ़िया बजट होगा। जो सरकार को फेवर नहीं करता है, उसके लिए आज का बजट दुनिया का सबसे बेकार बजट होगा। इससे फर्क ही नहीं पड़ता है
दोनों साइड को कि रियलिटी में बजट कैसा है। तो हम लोग ना एक साइड के ना दूसरे साइड के, हम लोग लिटरली देखेंगे कि सर एक्चुअल में आम जनता के लिए क्या है, किस एरिया में गवर्नमेंट पुश कर रहा है। जैसे ये गिवन है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे फिर बातें होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन पे, इन 3-4 आइटम्स पे बहुत डिटेल डिस्कशन होगा आज। एंड फिर टैक्स की बात तो होगी होगी। तपन बाबू, हर वो बच्चा जो स्टॉक रिकमेंडेशन देता और लेता है, सब बच्चे रो रहे हैं। इस पूरे धरती पे कोई चच्चा जी नहीं है जो इस स्टॉक को रिकमेंड कर सके, और जो करता है ना वो अपना बहुत गंदा कटवाता है। हम लोग इस सब चक्कर में नहीं पड़ेंगे। बाकी मैं ज्यादा बोल नहीं सकता हूं क्योंकि मेरा खुद का भी कटा हुआ है ढेर सारा, तो इसलिए लेट इट गो। चलिए बाबू, अक्टूबर में कौन सा बजट आया था बेटा? जहां तक मुझे ध्यान में अक्टूबर में कोई बजट आया ही नहीं था। जुलाई में आया था, वो भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन ईयर के कारण वैसा हुआ था, वरना जो बजट होती है एक्सेप्ट इलेक्शन ईयर वो 1 फरवरी को ही आती है। कोई मुझे बता सकता है क्या में से ये जो हेलो, हाँ जी किशन सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बढ़िया सर। सर मैं सुमित कुमार बात कर रहा हूँ यस बैंक से। अरे यार, कंपनी का एक रजिस्टर्ड हुई है। ये पता है क्या था सर? बच्चों आप जान लो यार, आप लोग के लिए भी है। अभी मैंने एक नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया, जस्ट थिंक अबाउट इट। मैंने नया जीएसटी रजिस्ट्रेशन लिया किसी और पर्पस के लिए। कुछ देर पहले मेरे पास मैसेज आया कि आपका अप्रूव हो गया, तो जीएसटी आईएन मेरे पास आ गया। ये डेटा कैसे लीक हुआ होगा कि बैंक वालों का फोन आना स्टार्ट हो गया है कि सर अकाउंट खुलवा लो। तो क्या ही बोल सकते हैं। आइए बाबू, हलवा पहले बढ़ चुका है। बजट जब प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद हलवा सेरेमनी होता है, उसके बाद ना बजट को सील पैक कर देते हैं, फिर बजट सीधे ओपन होता है आज के दिन। हाँ, ये अलग बात है कि पहले जो बजट होता था उसमें लेदर ब्रीफकेस होता था, कभी रेड कलर का कभी ब्लैक कलर का। बट 2019 में, यानी आज से 6 साल पहले, मैडम ने ये चेंज कर दिया। 2 चेंजेस हुए हैं। एक तो वो ब्रीफकेस को हम लोगों ने नाम देना स्टार्ट किया बही खाता, क्योंकि इंडियन ट्रेडिशन में लेखा जोखा जो होता है अकाउंटिंग, उसको बही खाता बोलते हैं। और दूसरा, करंटली द बजट इज कंप्लीटली पेपरलेस, तो फुल डिजिटल है। मैडम आप देख रहे होगे ये ना एक टैबलेट से पढ़ रही है, तो पेपर इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक है सर, वॉइस आ रही है सर? अखिलेश सर बाबू, उसको एक रूम में नहीं रखते, बट हाँ उनको एक जगह पे रखते हैं। आउटसाइड वर्ल्ड से उनका कांटेक्ट नहीं होता है, आउटसाइड वर्ल्ड से उनका कांटेक्ट नहीं होता है। अक्षत करा हलवा तो हमारा कटेगा। अक्षत बेटा, तुम कितना कमा ले रहे हो कि तुमको टैक्स से इतना इंपैक्ट पड़ रहा है? हाँ, जीएसटी से इंपैक्ट पड़ता है। जीएसटी बाबू देखो, लोग ना इस बात को नहीं समझते हैं। अभी हर जगह ना बातें हो रही हैं, इनकम टैक्स बहुत ज्यादा, इनकम टैक्स बहुत ज्यादा है। कोई मुझसे बोलेगा ना, मैं क्लियरली बता रहा हूं, इनकम टैक्स फिर भी उतना ज्यादा नहीं है जितना जीएसटी है। अगर आप सैलरी पर्सन हो, अगर आप इवन 50 से कमाते हो, आप कितना ही टैक्स पे करते होगे? करीब 12 लाख के अंदर। अगर आप 50 लाख तक का कमा रहे हो, 12 लाख के अंदर आपको टैक्स पे करना होता है। बट अगर आप प्रोफेशनल हो तो भैया उसमें तो जीएसटी भी है, इनकम टैक्स भी है। तो गवर्नमेंट को ना यार लोगों को प्रेशर डालना चाहिए जीएसटी कम करने के लिए। अभी क्या है, सब कोई प्रेशर डाल रहा है इनकम टैक्स कम करने के लिए। अब मुझे लगता है कि इनकम टैक्स इस बार थोड़ा कम होगा। बट मैंने को बताया था, इनकम टैक्स बाबू प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। जो बहुत ज्यादा कमाता है ना उसको ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, जो कम कमाता है उसको कम इंपैक्ट पड़ता है। जीएसटी का इंपैक्ट तो सब पे है।
प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो बजट आएगा उस पर जीएसटी की बातें कम होंगी, मेन बातें किसी होंगी इनकम टैक्स की। तो आइडियली जो प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए जीएसटी थोड़ा कम हो, इनकम टैक्स ही कम हो, बट जीएसटी थोड़ा सा कम तो होना चाहिए। बाबू निर्मला जी का आवाज आ रहा है, आएगा थोड़ी देर में। अरे हिमांशु बाबू, सबका टाइम आएगा, क्यों चिंता करते हो? ये सारी जो मेहनत हो रही है बजट पे वो इसलिए हो रही है कि जब तुम्हारी सैलरी स्टार्ट हो तो शुरुआत में तुमको टैक्स पे ना करना पड़े। अभी भी अगर किसी बच्चे की सैलरी 7.5 लाख रुपए तक है, 7.5 या 7.7 लाख तक, उसको टैक्स नहीं पे करना होता है। इनफैक्ट मैं बोलूं, अगर आपकी सैलरी 7 लाख रुपीज तक है, 7 लाख रुपया, आपको टैक्स जीरो पे करना है, लिटरली जीरो। इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, जीएसटी में तो यह सबका कटता है, जीएसटी से कोई नहीं बच सकता है। इनकम टैक्स में अप टू 7 लाख आपको टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है। आधे सीए लोग तो इसमें भी परेशान है कि जो उनका क्लाइंट पिछले साल टैक्स पे किया था, इस बार उसका टैक्स बन नहीं रहा है। तो पहले टैक्स बनता था तो 2,000 रुपए लेता था रिटर्न फाइल करने का, अब नील रिटर्न जाएगा, नील रिटर्न में 500,000 रुपए मिलता है। करेक्ट है सर। बहुत सारी चीजें अभी यहाँ पर आज हमें पता भी चलेगी रिलेटिंग टू द फ्यूचर टैक्सेस। डीटीसी भी सर आने वाला है, उस पर आप क्या बोलोगे? सर देखो, कब अभी तो नहीं आएगा? आ रहा, वो अभी तो नहीं बातें आ रहा होंगी, बातें है। होंगी, बट इतना जल्दी नहीं आएगा सर। राइट राइट। इनकम टैक्स इज वे टू कॉम्प्लेक्स, वे टू लार्ज। हम्म अगर ये ना, अगर आप देखोगे सर, जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है 115 बीएससी वाला, हम्म वो एक तरीके से ना स्टेप है टुवर्ड्स डीटीसी, डायरेक्ट टैक्स कोड। इस साल तो आने के चांसेस न के बराबर है, बट हाँ मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सारे आगे कैसे ये, सॉरी, आगे कैसे इसको इंप्लीमेंट करना है उसका क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। बट इस साल आ जाए थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा बराबर। मुश्किल है। बाकी सर अभी तो फिर से कुछ ट्राई कर रहे हैं बैकएंड से कि हम लोग स्पीच देख पाए। अब ये दिक्कत, ये मतलब क्या शेयर नहीं हो पा रहा है क्या सर? शेयर नहीं हो पा रहा है। जस्ट वी आर ट्राइंग दैट। आई गेस हो जाएगा। यस आई गेस। AIFs for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. ये बच्चों जो छोटे व्यापारी होते हैं, हालांकि एमएसएमई मैंने बताया These था, are supported by the fund of funds set up ये उसी बात हो रही है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की। हम्म ऑलमोस्ट with the वन government थर्ड of India's एम्प्लॉयमेंट ये लोग contribution जनरेट कर रहे of हैं। 10,000 और ये बहुत जरूरी है सर इनके लिए रिलीफ देना, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बट अगेन इस तरह से दो व्यू पॉइंट हैं। अब इनको एक फेवर क्या बोला गया कि कोई भी कंपनी इनसे अगर परचेजिंग कर रही है तो 45 दिन के अंदर पेमेंट करना होगा। हम्म अब इनके फेवर में चला गया, बट जिनको पेमेंट करना है अब वो हल्ला कर रहे हैं कि नहीं नहीं, now 45 the डेज बहुत new कम है। fund of funds करेक्ट। with expanded scope and a fresh contribution आई गेस न्यूज़ 10,000 चैनल crore पे rupees सेलिब्रेट will be कर रहा है। set up. सर संसद टीवी भी है ना, एक संसद टीवी। संसद पे ट्राई करता है। A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees. आई गेस हमें संसद पे ट्राई करना चाहिए। बिल्कुल सर। बाकी जो मुझे सुनाई दिया मैं वो थोड़ा सा बता देता हूं। देखो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सर सब कोई बोल रहा है कि रोजगार उत्पन्न करना है। प्रॉब्लम क्या है ना सर कि रियलिटी में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। अगर कोई सरकार ये बोलता है कि हम आएंगे और एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम खत्म कर देंगे, वो झूठ बोल रहा है।
अगर इतना ही दम है तो जितने During the स्टेट next गवर्नमेंट्स है वहां 5 पे कर लें। years, तरीका होता है कि आप प्राइवेट the सेक्टर को theme will सपोर्ट करो incorporate कि lessons from वो the जनरेट कर पाए, successful उसके लिए Stand-up India सरकार लोन scheme, दे रहा है। online दैट्स capacity दैट्स building ट्रू for सर कि entrepreneurship अनएम्प्लॉयमेंट and का प्रॉब्लम खत्म managerial हो नहीं skills सकता है अनलेस एंड will अनटिल also be हम लोग कुछ organized. स्टेप्स लेते हैं Measures उसके लिए, तो for ग्राउंड लेवल पर काम करना labor-intensive बहुत जरूरी है। sectors to promote बिल्कुल employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive सर, ये sectors. मैं ट्राई करूं क्या Our government will शेयरिंग का? undertake एक सेकंड, specific मैं शुभम policy को बोलता हूँ, and शुभेंद्र facilitation को। measures मैं एक बार to म्यूट हो रहा enhance हूँ। the productivity, quality, बच्चों, हम लोग and ट्राई कर रहे हैं बाबू, हम लोग ट्राई कर रहे हैं। competitiveness of India's footwear and leather sector. बहुत A कुछ focused ये product बच्चा कह रहा है, scheme बहुत कुछ will be इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में रिप्लेस implemented. कर दिया गया है, तो The बजट scheme will इंग्लिश में क्यों support बोला जा रहा है? design capacity, देखो बाबू, ये तो जो स्पीकर है component manufacturing, वो डिसाइड करता है। अब जैसे अगर अटल बिहारी वाजपेयी होते हैं या कल को अगर मोदी जी भाषण and दें machinery या अमित शाह, required वो for हिंदी में देंगे। production of निर्मला सीतारमण जी इंग्लिश में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। हैविंग सेड दैट ना, quality footwear. ये Besides जितनी the भी बातें हो रही है इन सबका ट्रांसलेशन अगर आप ना संसद टीवी पे जाओगे leather तो footwear गुजराती, and products. मलयाली, तेलुगु, The scheme is हर expected लैंग्वेज to में इसका facilitate ट्रांसलेशन employment आपको for मिल जाएगा। 22 lakh persons. मैं Generate ट्राई कर रहा हूं बाबू, 4 इसे lakh crore बैकएंड पे rupees कोशिश हो रही है, बैकएंड पे, and तो कभी exports कभी of टेक over इश्यू ना आते रहता है। 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toy sector, building on the एक सेकेंड सर, मैं शेयर करूं, क्या दिक्कत आएगा अगर मैं शेयर करूंगा तो? एक बार मैं ट्राई करता हूं, ठीक है? जब तक मैं एक बार मैं ट्राई करता हूं सर। our sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals. Is it working now? Beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program
Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. I think sir अभी हो They गया, will right? be provided healthcare under PM Jan Arogya Yojana. This measure Yes, is sir. likely to assist nearly Are you able to 1 hear me? crore gig workers. Investing in the economy, public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will Done, come done, up done. with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund, which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. 1.5 lakh crore Building on the infrastructure. success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. 10 Regulatory lakh and fiscal crore. measures will be बड़ा fine-tuned amount to है। support the plan. टोटल 11.5 लाख करोड़ Jal इंफ्रास्ट्रक्चर Jeevan पे हो Mission. चुका है। Since 2019, 15 आएगा crore बाबू, middle class households से। representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. और जिनको Urban बिहार sector का reforms. सॉरी जिनको पानी Building का on पता the है July budget वैसे भी नहीं मिल रहा proposals, है। urban sector पानी की बातें हो reforms रही हैं। related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an urban challenge fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms This is going to be and interesting. augmentation of sector. intrastate transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential मैंने for बोला था ना our कि गवर्नमेंट energy बहुत फोकस transition करेगा efforts. ट्रांजिशन ऑफ For पावर an सेक्टर में active कि जो partnership with the traditional private तरीके sector हैं, towards this उसको goal. change किया जाएगा। Amendments to the जैसे ही Atomic पावर का Energy बोला पावर Act स्टॉक्स में and the बहुत कर Civil रहा हूँ Liability for 1.5% ऊपर Nuclear चले गया। Damage Act 4% will be ऊपर है taken up. पावर स्टॉक। A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least Welcome, sir. 5 indigenously developed small modular reactors मेरे को ऐसा will लगता be है, what I personally operationalized feel by is 20 to कि 33. सरकार को ना इम्प्लीमेंटेशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए। Shipbuilding.
आप The लोन shipbuilding अमाउंट इंक्रीज कर financial देते हो, कोटा assistance इंक्रीज policy कर देते हो, will लेकिन be जब आप revamped हार्श रियलिटी to देखते हो address सरकार cost की, तो disadvantages. इतने ज्यादा This will पेपर, also इतने include ज्यादा credit डॉक्यूमेंट है कि notes बंदा for डिमोटिवेटेड हो जाता है। shipbreaking in सर Indian yards एक्चुअली जो to इम्प्लीमेंट कर रहा है ना promote वो the भी भारतीय circular ही है। economy. Large अपने ships पड़ोस का above a पार्क तो specified मेंटेन होता size नहीं है हम लोग से, will be to be very included frank। सर यही in the पंगा है ना, infrastructure जो करप्शन harmonized का लेवल है master list. पड़ोस का, हाँ, सोसाइटी इस का चीज जो पे बहुत ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज हाँ। सारी Shipbuilding गवर्नमेंट पॉलिसीज clusters में will मजा be नहीं आएगा। facilitated भाई to अकाउंटेबिलिटी increase the सर हम लोग range, इंश्योर कर सकते हैं categories सिटीजन, and capacity of ships. वरना This जितने will ये include वार्ड additional मेंबर होते हैं infrastructure, सारे बच्चों को पता होगा, आपके घर के बगल में facilities, जो नाली है skilling and वो उठाने वाले technology हैं, कितना to करप्शन develop the है। entire नहीं नहीं सर, ecosystem. मैं बात कर रहा Maritime हूँ Development मेनली Fund जो क्रेडिट for देने वाली बात है, long-term financing उस for the क्रेडिट को maritime देने के लिए, industry. जैसे A मेरे साथ maritime बहुत बार development मैंने fund देखा है, with a जो मेरे corpus of नोन है, 25,000 अगर मैं crore मुद्रा की rupees will एग्जांपल be लूं, set up. सब लोगों के जूते घिस रहे हैं मुद्रा This लोन will लेने be के अंदर। for distributed support बट बहुत लोगों को मिल and भी रहा है सर। promoting नहीं competition. मिल रहा है, This मिल will रहा have है, up to सर जब 49% आप contribution by सीए the के मत देखो government, सर, आप and the अगर balance अपने will be सीए के एंगल से mobilized देखोगे from कि ports सबका and मसालिस from हो जाए private तब बैंक sector. में जाओ फिर। आपको Udan अगर सस्ता regional चाहिए connectivity तो फिर scheme. खिंचवाना तो पड़ेगा ही सर, क्योंकि Udan कंपटीशन has वहां भी है। enabled सर मैं वही कह रहा 1.5 हूँ ना crore कि middle थोड़ा ध्यान class इस पर भी people दिया जाए तो और to बढ़िया meet है। their aspirations for एक बच्चे speedier कह रहे हैं travel. हमें कोई कंट्री से The एड scheme मिल has रहा है, connected 88 मिलता है बाबू, airports, बहुत कम मिलता है। airports and यूएसए में मिलता है operationalized बट वो हमें चाहिए नहीं, 619 हम मांगते routes. नहीं है, हम वो देते वैसे ही हैं। दे देते हैं, थोड़ा Inspired बहुत, by ऊपर को जाने that नहीं है। success, a modified Udan scheme will be launched to enhance regional connectivity to रीजनल 120 कनेक्टिविटी new सर, कल मैंने पढ़ा है destinations जीएसटी में, and कल carry रीजनल 4 crore कनेक्टिविटी स्कीम passengers in the next जीएसटी में 10 3 years. साल का बेनिफिट मिलता है, 4 कल पढ़ा है crore बच्चों को। additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional नॉर्थ districts. ईस्ट मतलब जीएसटी ना माफ बहुत अच्छा स्टेप है। Greenfield airports North will East be सिक्किम बागडोगरा में माफ facilitated होता in है, Bihar वहाँ पे और to इंक्रीज meet किया the जा रहा है। future सारा needs of the नॉर्थ ईस्ट state. वहीं से कनेक्टेड है, बागडोगरा के अलावा These एयरपोर्ट ही will नहीं be है, और बागडोगरा के बाद आप अगर नॉर्थ ईस्ट जाना है आपको तो कम से कम 6 से 7 घंटा कैब में बैठना पड़ेगा, चाहे आप कहीं भी जाओ, आप दार्जिलिंग जाओ, सिक्किम जाओ, 6 से 7 घंटे। These will be in addition स्टूडेंट के to लिए the बाबू expansion of अभी the ऐसा कुछ नहीं capacity है। of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. पटना की बात होगी, चलो अच्छी बात है। सब Western पटना के Kosi आसपास जो गांव है ना Canal सर, वो project in पटना के शहर बन गए Middlesex. हैं। Financial support will be पटना से जो provided for the 50 Western Kosi जो गांव हुआ Canal करते थे, ERM project, और वहाँ पे एयरपोर्ट बन गया benefiting है, a ये बन large रहा है, number of farmers, तो सारा एरिया का दाम cultivating बहुत over बढ़ गया। 50,000 हाँ, अब तो hectares बहुत of अच्छा land एयरपोर्ट बन in रहा है the सर पटना में। Middlesex पहले मैं region of जाता था Bihar. पटना, गाँव लगता था, रेलवे ऐसा था फ्लाइट जहाँ पर लैंड कर रही है बाहर ही उसके गेट है बहुत बिल्कुल। एयरपोर्ट है पटना वाला, डेंजरस है, बड़ा Mining प्लेन लैंड नहीं sector कर सकता reforms, है, including those एक्सीडेंट for हो जाएगा। rare minerals, रनवे तो will be बहुत छोटा है, encouraged through तो sharing छोटे प्लेन जाते हैं वहाँ of पे, best जो practices फुल and 737 मैक्स होता institutions है of a बोइंग वाला, state mining वो लैंडिंग नहीं index. कर सकता है। A policy for recovery of critical minerals को बच्चा from ये tailings डिजाइन की वैल्यू will अब be रही brought नहीं out. रहेगी। Under the special window for affordable and mid-income housing, कहाँ से आ रहा है बाबू? Swami, YouTube कम देखा करो 50,000 बेटा। dwelling units in stressed YouTube कम housing देखा करो। projects have been completed and keys GST handed में over to home buyers. बाकी प्रोफेशन को Another पावर मिला हुआ 40,000 है। units will be कितना जीएसटी completed का काम in सीए करता है और कितना 2025, जीएसटी काम further कोई helping और middle-class प्रोफेशन करता है। families who were paying मेजॉरिटी EMIs काम on सीए के पास loans है, taken ये for आपकी काबिलियत apartments पे है कि आप while कितने also काबिल हो। paying rent for their current dwellings. और अगर बच्चा कह रहा है ना सर Building इनकम on टैक्स this से शायद पावर success, शेयर हो जाए, Swami तो वो भी Fund जाएगा तो कोई 2 फर्क नहीं पड़ेगा सर। will तो be मेरी प्लान established as a blended अगर इनकम finance टैक्स के facility साइनिंग ऑथोरिटी with शेयर हो भी जाए contribution from the किसी और government, प्रोफेशन के banks साथ, and private investors. बहुत फर्क नहीं This पड़ेगा। fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant हलवा data सिखाने में वो पहले and होता है। maps from the PM Gati Shakti portal ये सारी will be provided. इकोनॉमिक्स में भी आ गई है पीएम गति शक्ति कौन सी scheme है, Tourism तो ये for बजट देखना employment चाहिए led बच्चों ने भी। growth. It's very Top relevant 50 from the tourist practical point of view. destination sites in the country
will be developed in partnership with states through a challenge mode. Good. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. बढ़िया. The following measures will be taken Market अभी तक for plus में है. facilitating हल्का सा plus में है. employment-led Stock growth. market. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts. And introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Tourism ko badhawa. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance Ayodhya. in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Immediately, sir. Eat my trip is 8% up. Medical tourism and heal in India. Eat my trip ka stock 8% Medical ऊपर tourism चलेगा. and heal in India will be promoted in partnership with the private sector, along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development, and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related
to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. इंडिया पहले से डिसेंट्रलाइज्ड है बाबू. The services आपकी of स्टेट India गवर्नमेंट के Post पास बहुत सारे Payment पावर्स हैं. Bank will be deepened टैक्स and बाबू पार्ट भी expanded in कहता है. rural अगर आप areas. शुरू से ज्वाइन किए हो तो मैं बता चुका हूं. NAB बजट स्पीच का दो पार्ट है. will set up a पार्ट partial बी credit जो टैक्स enhancement रिफॉर्म्स होंगे facility amendments, for वो पार्ट बी corporate में आएगा. bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score Framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures.
A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive cooperative federalism. कौन सा Under the स्टेट Financial कितना Stability and ज्यादा Development इन्वेस्टर Council, फ्रेंडली है a उसके लिए mechanism will रेटिंग be set सिस्टम आने वाला है up to evaluate impact of the current financial regulations and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. fiscal deficit Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. अगले To साल की finance the टैक्स fiscal से deficit, नेट the net market borrowings from dated Net, securities are after refund. estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. अब टैक्स की बात होगी सर पार्ट बी में पार्ट बी बच्चों Indirect taxes. पार्ट बी My proposals relating ये to interesting है customs बहुत। aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge.
Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above. Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted Critical BCD mineral, बाबू, on 25 rare earth critical metal हो गया, जो minerals that semiconductor are में not बताता हूं domestically class में, available. उसकी बात हो रही है. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure their availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time Basic period for customer duty. export from
BCD 6 months to 1 year, GST में बताया तो further extendable by another 3 Import of months goods with if BCD. required. Basic I custom also duty. propose to add This 9 is India. items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigated बच्चों ये जो इनकम investigation टैक्स में सेक्शन proceedings. 140B है For अपडेटेड industry रिटर्न to वैसा better कस्टम plan में भी their ला दिया गया imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. डायरेक्ट टैक्स In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse
and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. Reducing compliance burden. Ease of doing business, employment and investment. I will come to my proposal on personal income tax towards the end. TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Further, threshold amounts for tax deduction will be increased for better clarity and uniformity. The limit for tax deduction on interest for senior citizens is being doubled from the present 50,000 rupees to 1 lakh rupees. 194A, 50,000 से Similarly, the annual limit of 2.40 lakh rupees for TDS on rent is being increased to 6 lakh rupees. This will reduce the number of transactions liable to TDS, thus benefiting small taxpayers receiving small payments. The threshold to collect tax at source, the TCS, on remittances under RBI's liberalized remittance scheme, the NRS, is proposed to be increased from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education purposes, where such remittances is out of a loan taken from a specified financial institution. Yes, again. 0.5% पे था TDS सर, and उसको हटा दिया TCS गया है। are being applied on any transaction related to sale of goods. To prevent such compliance difficulties, I propose to omit the TCS. I also propose that the provisions of the higher TDS deduction will now apply only in non-PAN cases. In July 2024, the delay for payment of TDS up to the due date of filing statement was decriminalized. I propose to provide the same relaxation to TCS provisions as well. The government under the leadership of Prime Minister Modi believes in Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas and Sabka Prayas. In line with this, we brought in updated return facility in 2022 for voluntary compliance by taxpayers who had omitted to report their correct income. Our trust in taxpayers was proved right. Nearly 90 lakh taxpayers voluntarily updated their incomes by paying additional tax. Taking this trust further, I now propose to extend the time limit to file updated returns for any assessment year from the current limit of 2 years to 4 years. I propose to reduce the compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. It is also proposed that disproportionate consequences do not arise for minor defaults such as incomplete applications filed by charitable entities. Presently, taxpayers can claim the annual value of self-occupied properties as nil only on the fulfillment of certain conditions. Considering the difficulties faced by taxpayers, it is proposed
to allow the benefit of 2 such self-occupied properties without any condition. To streamline the process of transfer pricing and to provide an alternative to yearly examination, I propose to introduce a scheme for determining arm's length price of international transaction for a block period of 3 years. This will be in line with global best practices. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, the scope of safe harbor rules is being expanded. बाबू आप लोग A number of TP और senior safe and harbor very rules senior ये final citizens पढ़ना है। have very old national savings schemes accounts. As interest is no longer payable on such accounts, I propose to exempt withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024. I am also proposing to allow similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS accounts subject to overall limits. In my speech in July 2024, I had promised that all processes, including giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. So I'm happy to announce that digitalization is being made operational now. In July 2024, we brought in the Vivad Se Vishwas scheme to resolve income tax disputes pending in appeal. The scheme has received a great response, with nearly 33,000 taxpayers having availed of the scheme to settle their disputes. I have a few proposals to promote investment and employment. It is proposed to provide a presumptive taxation regime for non-residents who provide services to a resident company that is establishing or operating an electronics manufacturing facility. I further propose to introduce a safe harbor for tax certainty for non-residents who store components for supply to specified electronics manufacturing units. Presently, the tonnage tax scheme is available only to sea-going ships. The benefits of existing tonnage tax scheme are proposed to be extended to inland vessels registered under the Indian Vessels Act 2021 to promote inland water transport in the country. Extension for incorporation of startups. We continue to support the Indian startup ecosystem. I propose to extend the period of incorporation by 5 years to allow the benefit available to startups which are incorporated before 1/4/2030. In order to attract and promote additional activities in the IFSC, I am inter alia proposing specific benefits to ship leasing units, insurance offices, and treasury centers of global companies which are set up in IFSC. Further, to claim benefits, the cut-off date for commencement in IFSC has also been extended by 5 years to 31/3/2030. Category 1 and Category 2 AIFs are undertaking investments in infrastructure and other such sectors. I propose to provide certainty of taxation to these entities on the gains from securities, to promote funding from sovereign wealth funds and pension funds to the infrastructure sector. I propose to extend the date of making an investment by 5 more years up to 31st March 2030. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Democracy, demography, and demand are the key support pillars in our journey towards Vikasit Bharat. The middle class provides strength for India's growth. This government, under the leadership of Prime Minister Modi, has always believed in the admirable energy and ability of the middle class in nation building. In recognition of their contribution, we have periodically reduced their tax burden. Right after 2014,
the nil tax slab was raised to 2.5 lakhs of rupees, which was further raised to 5 lakh rupees in 2019 and to 7 lakh rupees in 2023. This is reflective of our government's trust on the middle class taxpayers. I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. 12 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं। कितना? 12 लाख? 12 लाख। यानी 1 लाख पर महीना कोई टैक्स नहीं। बहुत बड़ा बात है। अब सोचो 10 साल के अंदर एक तरह से गवर्नमेंट ने 5 गुना एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ा दिया। इनफैक्ट इकोनॉमिक सर्वे में एक ऑब्जर्वेशन है कि इंडियन कंपनीज कमा ज्यादा रही हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दे रहे हैं। Average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime. This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. In the new tax regime, I propose to revise tax rate structures as follows: 0 to 4 lakh rupees nil, 4.8 lakh rupees to 4 to 8 lakh rupees 5%, 8 to 12 lakh rupees 10%, 12 to 16 lakh rupees 15%, 16 to 20 lakh rupees 20%, 20 to 24 lakh rupees 25%, and above 24 lakh rupees 30%. To taxpayers up to 12 lakh of normal income, other than special rate income such as capital gains. I read that again. To taxpayers up to 12 lakh of income, other than special rate income such as capital gains, tax rebate is being provided in addition to the benefit due to slab rate reduction in such a manner that there is no tax payable by them. The total tax benefit of slab rate changes and rebate at different income levels can be illustrated with a few examples. A taxpayer in the new regime with an income of 12 lakh rupees will get a benefit of 80,000 rupees in tax, which is 100% of tax payable as per the existing rates. A person having income of 18 lakh rupees will get a benefit of 70,000 rupees in tax. That is 30% of tax payable as per existing rates. A person with an income of 25 lakh gets a benefit of 1,10,000 rupees, that is 25% of his tax payable as per existing rates. Details of my tax proposals are given in the annexure. As a result of these proposals, Honorable Speaker, sir, revenue of about 1 lakh crore in direct taxes and 2,600 crores in indirect taxes will be foregone. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. बहुत शॉर्ट बजट है सर, बहुत शॉर्ट बजट है ये। हाँ, नॉर्मली इनका बजट लंबा होता है। हाँ, नॉर्मली 1.5 घंटा में मान के चलते हैं, इवन 2.5 घंटा बोला था। आज श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3(1) of the Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2003. Medium-term fiscal policy, fiscal policy strategy statement, and macroeconomic framework statement. Item number 3, श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Bill 2025.
तो अभी सर ऐसा कुछ हुआ है कि अभी तो ये प्रपोजल्स हुए हैं। अब जैसा कि सबको पता है कि इंडिया में कुछ भी होगा, इट हैज टू हैव लीगल बैकिंग। अब सरकार दो बिल प्रेजेंट करेगी, एक तो फाइनेंस बिल जिसमें जो भी टैक्स प्रपोजल्स हैं वो सबको लीगल सैंक्टिटी मिलेगी जब वो लोकसभा राज्यसभा से पास होगा एंड प्रेसिडेंट साइन करेंगे। एक और होता है एप्रोप्रिएशन बिल। अब नॉर्मली क्लास में सब लोग नहीं बताते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल का मेन मकसद ये होता है कि इंडिया के जो पैसे हैं वो तीन जगह पे रखते हैं, एक कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, करेक्ट, एक कंटिजेंसी फंड और एक पब्लिक अकाउंट। इसमें से जो एक्चुअल में परमिशन चाहिए होता है गवर्नमेंट को, वो चाहिए होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसे विड्रॉ करने के लिए, और ये परमिशन हर साल चाहिए होता है, राइट, फाइनेंशियल स्टार्ट होने के पहले। तो 1 अप्रैल से फाइनेंशियल स्टार्ट होगा, 31 मार्च तक ये जो फाइनेंस बिल है और ये जो एप्रोप्रिएशन बिल है इसको अप्रूव होना होता है। तो अभी कुछ आज ज्यादा डिबेट नहीं होगा, आज थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला होगा। अगले 13 दिन तक, क्योंकि इस बार जो बजट सेशन है वो 13 फरवरी तक है, कुछ डिस्कशंस होंगे, फिर ये सारा जो पार्लियामेंट है ये एडजॉर्न हो जाएगा ऑलमोस्ट 4 हफ्ते के लिए। अगले महीना फिर असेंबल होगा एंड तब बजट सेशन का पार्ट 2 होगा। तो अच्छा, एक बात मैं फिर से बता दे रहा हूं, कोई बच्चा इसमें कंफ्यूज नहीं होगा। ये जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं, इट विल नॉट इम्पैक्ट योर May 25, it will not impact your September 25, it will not impact even the January 26। तो आप उसका चिंता मत करना। बाकी सर प्लीज आप बताइए सर। बाकी सर मैं एक शॉर्ट में, जो शायद बहुत सारे लोगों को जो जानना होता है, मैं स्लैब्स एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। 0 to 4 लाख जो है वहां पर हमें नील टैक्स रेट रहेगा। 4 to 8 लाख में 5% का टैक्स होगा। 8 लाख to 12 लाख में 10% होगा। 12 लाख to 16 लाख में 15% होगा। 16 to 20 में 20% एंड 20 लाख to 25 लाख में 25% होगा। 24 लाख 24 एंड उसके अबव 30% होगा। सो दिस आर द न्यू टैक्स स्लैब्स, जो कि अगेन सर ने कहा है कि इमीडिएटली जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। अच्छा, और ये भी सर डिफॉल्ट टैक्सेशन में है। मतलब अभी ना एक नौटंकी क्या चल रहा है कि सिंप्लीफिकेशन के नाम पे नया ला दिया गया है, बट पुराने को ना छोड़ा नहीं गया है। करेक्ट, तो बच्चा सिर्फ 2 बार पढ़ता है, एक पढ़ता है ओल्ड टैक्स रिजीम जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं, नॉर्मल, रेगुलर, ओल्ड, ऑप्शनल, 4 नाम है सर। और जो अभी बातें होती है जिसमें अमेंडमेंट्स आ रहे हैं वो सारा है न्यू टैक्स रिजीम या डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ये सारे अमेंडमेंट डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के हैं। दूसरा, एक बच्चा बोल सकता है कि सर अभी तो आप लोगों ने बोला कि 4 लाख तक निल है, उसके बाद से टैक्स का रेट है। तो बाबू 4 लाख ना बेसिक एग्जेम्पशन है या मैक्सिमम इनकम नॉट चार्ज टैक्स है, जो उसके बाद टैक्स रेट लगता है, बट उसमें ना फिर रिबेट आता है, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो रिबेट को जब इस्तेमाल करोगे तो आपका ये 12 लाख निल हो जाएगा। एंड ऑब्वियसली ये सर जो भी रिलैक्सेशंस है ये बाबू नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल इनकम पे है, जो स्लैब पे टैक्स होता है, जो LTCG है 112, 112A या 111A वाला, जो कैजुअल इनकम 115B, BBE वो सब वाला, उन सब पे वो टैक्स रेट चालू है, उससे रिलैक्सेशन बाबू नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। किसी को लगे कि सर मैंने घर बेचा, पैसा कमा गया, या मैंने लॉटरी जीत गया, अब वो लॉटरी जीतने पे आपको ये रिलैक्सेशन नहीं है। करेक्ट। बाबू मैंने बता दिया ना 12 लाख को कैसे करना है। हिमांशु, अच्छा एक और पॉइंट, जिन भी बच्चों को, हालांकि अभी तो एग्जाम में जरूरत नहीं है, ये एक बाबू स्पीच है, इसके बाद ना इसका डॉक्यूमेंट रिलीज होगा, उसमें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है। तो अगर आपको डिटेल में कोई प्रोविजन को स्टडी करना है तो गवर्नमेंट एक तो आपको बता दिया प्रपोजल, एंड उसका ना डिटेल्ड टेक्स्ट भी देता है जिसमें पूरा बैकग्राउंड वगैरह होता है। आप वो मेमोरेंडम पढ़ सकते हो। पढ़ना तो पढ़ना, वाला कोई बात नहीं, टीचर तो पढ़ते ही है, वो आपको बता देंगे। सर कैसा लगा सर आपको बजट मोटा मोटा? सर मतलब ऐसे कुछ बहुत ज्यादा चीजें तो नहीं थी, बहुत ही न्यूट्रल ही लगा। मतलब एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा थी इस बार शायद, जिस तरीके से था, बट ठीक है। ओवरऑल आई कैन से दैट कि इट वाज नॉट बैड एंड इट वाज नॉट दैट ग्रेट एज वेल, बट इट वाज
फेयर इनफ। अभी इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे। आपको कैसा लगा सर? सर देखो, मैंने ना पहले ही बोला था कि 2-3 जगह फोकस रहेगा। हाँ। प्रत्यक्ष पर रहेगा, दबा के डाला गया पैसा इस बार भी। एनर्जी ट्रांजिशन, क्योंकि ना सर ग्लोबली वैसे भी सर पता है कि मोदी गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि 2070 तक, तब तक में भी हम लोग जिंदा रहे ना रहे, तब तक हम लोग नेट कार्बन जीरो हो जाएंगे, इंडिया एज अ कंट्री। राइट राइट राइट। बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ग्रीन एनर्जी सेक्टर है वो एक्सपैंड करे। तो उसी के चक्कर में बैटरी वगैरह पे इन्वेस्टमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी की बातें हुई है, तो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है। बाकी हर बजट का होता है विमेन, यूथ, एम्प्लॉयमेंट, इसमें आधे बातें लिप सर्विस होती हैं, बस बोल दिया। कुछ कुछ इफेक्टिव बातें हैं, बाकी सो बजट है। सो है। मुझे सर एक्सपेक्टेशन ऐसे भी थी कि शायद कुछ इस बार एसटीटी के बारे में कुछ बोले ना बोले, दैट वाज वन थिंग। क्योंकि एसटीटी ना मैं बताता हूं क्यों नहीं बोलते हैं सर। हाँ। बाबू, एसटीटी मतलब सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, सेक्शन 36 में आपको पढ़ाया गया है, डिडक्शन मिलता है पीजीपी के अंदर। सर देखो, जो इन्वेस्टर होता है ना सर इंडिया में, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। आधे नहीं, 80% रिटेल इन्वेस्टर को पता ही नहीं है कि वो एसटीटी पे करता है। हाँ राइट। आपको पता है क्योंकि आप इस फील्ड के हो, मुझे पता हम लोग इस फील्ड के हैं। 80% प्लस लोगों को पता ही नहीं है कि जब वो स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर खरीदते हैं तो एसटीटी में कुछ होता है। तो वो ना इन्वेस्टर सेंटिमेंट को मेरे हिसाब से उतना इंपैक्ट नहीं करता है। नहीं करेगा। बट सर आपको पता होगा, मतलब आपको तो, आप टैक्स के टीचर हो, कि एसटीटी लाया क्यों गया था? बिकॉज तब एलटीसीजी हुआ नहीं करता था, और एलटीसीजी हमारा 10% से 12.5% भी हो गया, और एसटीटी भी है। तो ये सारी चीजें लेकर आए हैं, लेकिन इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे इंक्रीज होता है कहीं ना कहीं पर हमारे ट्रांजैक्शन चार्जेस में। वो तो होता ही है, बट लोगों को पता नहीं चलता है ना सर। हाँ हाँ, वो पता नहीं चलता है। दैट्स ट्रू, मैं दैट्स फिर ट्रू। बोल रहा हूं, इनकम टैक्स से ज्यादा खतरनाक जीएसटी है। सर जीएसटी का एक और मेरे से मतलब आपकी राय जानना चाहूंगा। आई हैड दिस ओपिनियन कि इंश्योरेंस पर हमारा जीएसटी जो है 18% वो कम होगा इस बार। मुझे एक्सपेक्टेशंस थी थोड़ी वो बहुत। मैं बता रहा हूं सर क्या हुआ है एक्चुअली। कल अभी ना जीएसटी में एग्जाम्पशन चैप्टर में पढ़ा रहा हूं। तो जैसे आज बच्चों आपको दिखाई दिया होगा, आईएफएससी की बात हुई है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। हमने कल एक्सप्लेन किया है सर। इंश्योरेंस जो हमने कल बताया था, कम होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो होना ही नहीं चाहिए। गवर्नमेंट इसको ना मना नहीं किया है। जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था 21 दिसंबर को, तो ये वाइडली एक्सपेक्टेड था कि मे बी कुछ रिलीफ मिले। अब प्रेशर इतना ज्यादा था क्योंकि बीजेपी के जो सांसद हैं, इंक्लूडिंग नितिन गडकरी जी, हाँ, उन्होंने भी ट्वीट किया था। हाँ, तो गवर्नमेंट ने ना चुप नहीं बैठा, रिलीफ नहीं दिया। क्या बोला, अभी हम इसको वाइडर कंसल्टेशन के लिए भेज रहे हैं। हाँ, इन्होंने बेसिकली पोस्टपोन कर दिया है। अगर मैटर शांत हो गया तो ये कम नहीं करेंगे, अगर मैटर शांत नहीं हुआ तो या तो कम करेंगे या एग्जाम भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से टर्म लाइफ इंश्योरेंस, क्या एग्जाम करेंगे सर? टर्म लाइफ को एग्जाम होना चाहिए, टर्म लाइफ को, सारे लाइफ इंश्योरेंस को नहीं, टर्म लाइफ को एग्जाम हो जाना चाहिए। जो बाकी है ना उसमें आप 5-12 लगा सकते हो, बट टर्म लाइफ को एग्जाम होना चाहिए सर। देखो सर, 5 का तो एक्सपेक्टेशन किया नहीं था क्योंकि तो 12 पे तो हो, कम नहीं करेंगे। 12% तो होना ही चाहिए था, बिकॉज इट इज अ बेसिक नीड आई वुड से, क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा बहुत बढ़ गया है। एंड इफ दे आर टेलिंग दैट कि इंश्योरेंस लेना चाहिए, तो ये बहुत ही एक बेसिक चीज थी जो कि सब लोग लेते हैं। तो ये वाली एक चीज मिडल मैन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बजट में आना चाहिए था। एक बच्चा कह रहा है, प्रियांशी बाबू, मैंने इस सेशन के एकदम शुरुआत में भी बोला, बीच में भी बोला और अंत में भी बोला, ये सारे प्रोविजंस आपको इंपैक्ट नहीं करेंगे। नहीं हो गया, हाँ, खत्म। आपको तो आज ये डाउट्स बहुत ज्यादा आएंगे। भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपने बस सुन लिया, समझ लिया। अगले साल जब आपका टाइम आएगा, उस समय आप जब दोबारा सुनोगे ना, तो आपको अंडरस्टैंडिंग ज्यादा मिलेगी। बाकी जो भी अमेंडमेंट्स आएंगे वो सब आपको सीए फाइनल में पढ़ना है, अभी नहीं। डीटीसी का जो बच्चे बोल रहे हैं बाबू, अभी अगले हफ्ते अलग से बिल आएगा। बिल में मैडम ने बोला है कि 50% सेम है। इसका मतलब ये भी है कि सर मेरा 6 महीना फिर बर्बाद होगा। जीवन ना किताब बनाने, अपडेट करने, इसी में निकल जा रहा है। यस सर, टैक्स महीना टीचर को तो सर कोई ऑप्शन है नहीं, उन्हें हमेशा वो चीजें बदलनी है। एंड पहले भी पढ़ाई करी थी, अभी भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। सर एक्चुअली क्या हुआ है ना सर, एक होता है अमेंडमेंट। अगर इन्होंने बिल ले आए,
फाइनेंस एक्ट 6 महीना कहीं नहीं गया, मतलब मैं मार्च के बाद 4 महीना तो एकदम पैक हो जाऊंगा किताब हाँ, बनाने में। तो ये बराबर अगर है, 50% सेम है यानी 50% नया है, बाकी बराबर है चलता सर। है। अमित बेटा सुना करो ना, बता दिया हमने डीटीसी का क्या होगा। अगले हफ्ता बिल आएगा, ज्यादा क्लैरिटी तब मिलेगी। और वैसे भी गाइस, आज ये जो हम लोग कर रहे थे लाइव, दिस वाज मोर ऑफ कि आप लोग भी हमारे साथ सुनो। अगर हम लोग आपको कहते हैं कि यार तुम सुन लो, तो तुम सुनने नहीं वाले। हम लोग तो डेफिनेटली आज यहाँ पर नहीं होते थे, तो भी हम घर पे यही करते थे, सुनते थे। तो इट इज जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आप लोग भी हमारे साथ देखो। अभी सर भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, हम डिटेल में थोड़ा सा नोट्स निकालेंगे एंड अगेन विल कम बैक टू यू। हम लोग अपने अपने तरीके से इसको एनालाइज कर आपके सामने रखेंगे। सो दिस वाज अ प्रिलिमिनरी थिंग दैट वी हैव डन टुडे। चलिए, होपफुली ठीक है बाबू सर। आप लोग को कुछ पर्सपेक्टिव मिला होगा। बाकी मैं फिर बोल रहा हूं, ध्यान मत दीजिएगा इस पे। जितना सीख लिया वेरी गुड। बाकी अगले साल जब आप सीए फाइनल में पहुंच जाओगे, तब इसका इंपैक्ट आपको जानने को मिलेगा। ख्याल रखिएगा सर। चलिए लास्ट वर्ड सर। सर आप बता दीजिए, फिर चलते हैं हम लोग भी। यस यस यस, तो गाइस आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं एंड यस डू स्टे अपडेटेड, क्योंकि हम लोग यहाँ पर आएंगे बहुत सारे छोटे मोटे एनालिसिस के साथ जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। डेफिनेटली विल कम अप विद द शॉर्ट नोट्स। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर गाइस, सी यू। गॉड ब्लेस बाबा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। एक सेकंड, बच्चा कह रहा आर्टिकलशिप नहीं बाबू, आर्टिकलशिप के लिए एक सेकंड में बता देता हूं, एक सेकंड। आर्टिकलशिप में इसका इंपैक्ट पड़ेगा जो आप अगले साल करोगे उसका। मतलब अभी अगर आप अप्रैल के बाद जो ऑडिट करने जाओगे, वो आप ऑडिट करोगे FY 24-25 का, उस पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलो बाय बाय।